Hello everyone. Very good afternoon to everyone guys. Today we are going to start a new series which is based on general science and technology. And today we are going to discuss one of the important topic which is satellite. And guys, from starting the topics of general science and technology, you should understand what is the role and what you should remember during the preparation of general science and technology. Because if you know what is the weightage of that subject and which kind of questions they will now asking, because the pattern of RPSC exam is changing day by day, so definitely you should understand about the subject and you should make your own strategy. So initially we will discuss about the science and technology, and after that we will start. Yeah, good morning everyone. Very good morning to all of you guys. And guys, एक क्वेश्चन है सर, उत्कर्ष ऐप में लाइव ज्वाइन कैसे होते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। गाइज, अगर कोई भी क्लास आपको दिख रही है और वहाँ पर लाइव क्लासेस का ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है, तो जस्ट क्लिक कर दो उस क्लास के ऊपर, फिर आप उसे देख सकते हो। Yeah, good evening everyone. So first of all guys, you should understand about general science and technology. तो हमारे आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स और मींस के लिए आपको जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, it is a very important and crucial subject for prelims as well as means because it contains huge marks. तो इट कवर्स अराउंड 70 मार्क्स इन मेंस, तो 70 नंबर सीधे आपके जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मार्क्स की, तो देखो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रीलिम्स में अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क फ्रॉम जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको पता ही होगा कि हमारे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 1.3, तो अराउंड 20 into 1.3 करोगे तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 200 आपको ये मिल जाएंगे 27 मार्क्स। हाँ, तो बिल्कुल जो डेमो क्लासेस है वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, ज्वाइन कर सकते हो आप डेमो क्लासेस। आप जस्ट जो लिंक दिया जा रहा है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक करें, देन यू कैन एक्सेस द क्लासेस। तो ध्यान रखो 20 क्वेश्चन है तो अराउंड आपके अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क्स जो होंगे वो प्रीलिम्स के अंदर मैटर करेगा। और 27 मार्क्स का मतलब आप जानते ही हो, अराउंड 200 मार्क्स का अपना पूरा का पूरा प्रीलिम्स है, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 13 to 14%। तो प्रीलिम्स के अंदर जो वेटेज है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 30 to 14% है। मेंस के अंदर इट विल गिव यू 70 मार्क्स, और आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो मेंस होता है हमारा वो 800 मार्क्स का होता है, और उस 800 मार्क्स में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है आफ्टर हिंदी वो हमारे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है। तो अराउंड लेस देन 10% मार्क्स मीन्स में आपको मिलेंगे, तो इट इज़ लेस देन 10% मार्क्स। और आपको पता ही है कि अब अराउंड 39% पर तो फाइनल टॉपर बन रहे हैं, तो उसमें से 10% का जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ऑब्वियसली अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अच्छा कमांड करोगे देन डेफिनेटली it will give you much more marks than you expected. But remember that guys, there is a trick and strategy about the preparation of general science and technology, otherwise you are not going to attempt a single question if you are don't have any proper strategy. So first of all, general science and technology contains 4 major sections. Initially
we will discuss about technology, because guys, technology and its role day by day increasing, and the weightage of technology's question is also increasing day by day. In means technology contains around 35 marks, यानी more than 50% marks. तो मीन्स में टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है ये 35 मार्क्स का है, विच इज वेरी ह्यूज. और प्रीलिम्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में अराउंड 5 to 7 question directly asked from technology. And the second important section of general science and technology is biology. And remember that guys, previously, before 2021, the most dominating section of general science and technology is biology. That's why most of the coachings and teachers just heavily focused on biology. But nowadays the weightage and applications of biology is decreasing day by day. तो prelims हो या मेंस हो, दोनों में ही बायोलॉजी का जो वेटेज पहले जितना था उतना अब नहीं रहा है. तो पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स केवल और केवल बायोलॉजी ही पढ़कर चला जाता था, बट अब ऐसा नहीं है. तो डेफिनेटली if you want to score more, then you should be more focused on applied topics. And definitely applied topics में टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अगर आप लोगों ने नया सिलेबस देखा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो मोर एप्लीकेबल कर दिया गया है, एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है. और इवन आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, स्पेशली लास्ट 2 मेंस के in 2023 and 2024, then there is a drastic change. 2024 जो है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप से टेक्नोलॉजी पूछा गया. इवन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पेपर भी आ रहे हैं, जैसे कि बिग डेटा एनालिसिस में इन्होंने अपाचे हुडूप के बारे में पूछ लिया, विच इज़ ए कोर टेक्निकल सेक्शन ऑफ बिग डेटा एनालिसिस. एंड नॉट ओनली इन मीन्स, in prelims also they want to ask question specifically to technology. तो इसीलिए इन्होंने different type of radars पर क्वेश्चन पूछे. like in 2024 prelims में they ask about a question of active electronic systems array radar and passive electronic systems array radar. तो definitely you should understand not only the name of radar and their range and their capability, but you should understand what is the type of radar, what is their technology. Then you can able to attempt the question. तो डेफिनेटली गाइज अब आपको अब अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी. अब वो जमाना गया जब आप केवल सरफेशियली वन लाइनर टाइप से चीजें पढ़ लेते थे, रट लेते थे और एग्जाम हो जाता था. अब ये नया जमाना है जिसमें आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा. इवन नॉट ओनली इन RAS, RPSC in SI exam is also asked is some technical question like amplitude modulation में they asked about Nyquist equation. जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ Nyquist इक्वेशंस यूज की जाती हैं. बट ये बहुत कोर मैथमेटिकल और अप्लाइड टॉपिक था, बट इन्होंने पूछ लिया. Even in not only in RPSC SI exam, in RPSC commandant exam also they ask a applied question from biology. आप लोगों ने देखा होगा कि नए सिलेबस के अंदर इन्होंने माइक्रोब्स को ऐड कर दिया है. माइक्रोब्स आर सम स्मॉल टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म which can be good for human beings or cannot be good for human beings. तो कुछ गुड माइक्रोब्स हो सकते हैं, कुछ बैड माइक्रोब्स हो सकते हैं. तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है. तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आता है कोरोनरी आर्टरी में एक ब्लड क्लॉट होने की वजह से. तो एज ए एंटीकोगुलेंट एजेंट किस बैक्टीरिया, किस माइक्रोब की मदद से हम लोग एज ए एंटीकोगुलेंट एजेंट बनाते हैं जिससे हार्ट अटैक की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके. दैट माइक्रोब इज स्ट्रेप्टोकोकस. तो सोचकर देखिए जो करंट इश्यूज चल रहे हैं जहां पर लोगों के हार्ट अटैक के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, उसका इन्होंने डायरेक्टली कन्वेंशनल माइक्रोब से लिंक ढूंढा
और फिर उस पर क्वेश्चन पूछा, तो डेफिनेटली अब आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब वो सरफेशियली पढ़ने का जमाना नहीं है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर RAS prelims as well as RAS means, especially in English medium, then you should dive into some depth, and if you are able to find some pulse of your knowledge, then you can able to score a good rank. अदरवाइज आप लोग देख ही रहे हो इस बार के रिजल्ट में बहुत सारे लोगों ने रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ, और मोस्ट ऑफ द लोगों की जो रैंक है इस बार इम्प्रूव नहीं हो पाई। इसीलिए 2024 के अंदर आपको बहुत सारी सीट खाली मिलेंगी। तो अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो या करने वाले हो या फिर कर रहे हो, तीनों ही सिचुएशंस में आपको नई स्ट्रेटजी के साथ में और नए एंथुजियाज्म के साथ में पढ़ने की ज़रूरत है। तो यू शुड थिंक अबाउट योर स्ट्रेटजी, और इसके लिए आप लोगों को मीन्स क्वालिफाई करना है तो वन एंड ओनली टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और उसके बाद में बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के मेंस में क्वेश्चन अगर हम देखें तो 20 to 25 मार्क्स के मेंस में क्वेश्चन आने वाले हैं बायोलॉजी के। प्रीलिम्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड रिमेंबर दैट इन दिस सेक्शन बायोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी आल्सो, बिकॉज हमारे प्रीलिम्स के सेक्शन में एनवायरमेंट इकोलॉजी भी बायोलॉजी में ही दिया हुआ है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बट दे mentioned it, so we have to discuss it. And remember that guys, after that we will study about some topics of physics, then some topics of chemistry. तो फिजिक्स की बात करें तो अराउंड 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मीन्स के अंदर। तो मीन्स के अंदर जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि 5 to 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। सेम ऐसे ही मेंस के अंदर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे ये अराउंड 10 to 15 मार्क्स के होंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर अराउंड 10 to 25 मार्क्स तक कवर करते हैं। फिजिक्स के लगभग प्रीलिम्स में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, और ये केमिस्ट्री के अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे। ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर दे विल आस्क अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस। तो ये चीजें रहेंगी ही रहेंगी। इसके बाद में अगर आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू शुड लर्न अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू राजस्थान, बिकॉज कम से कम प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आपके राजस्थान स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे। तो इन्होंने अलग से हमारे सिलेबस में मेंशन कर दिया है राजस्थान स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग इसका कुछ सेक्शन ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हो, लाइक ज्योग्राफी में भी आप लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सा एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ है ये पढ़ लेते हो, डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स के नाम पढ़ लेते हो आप। इसके अलावा आप लोगों को राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देयर डिफरेंट स्कीम्स एंड देयर न्यू साइंस पार्क्स, न्यू साइंस रिलेटेड technology centers, their new initiatives, like few months ago Rajasthan government launched a new policy which is Rajasthan AI ML policy 2026. So definitely you should know about what is Rajasthan AI ML policy, what is their impact, ये सब आपको देखना पड़ेगा। and remember that guys, specifically हमारे नए सिलेबस के अंदर आरपीएससी ने मेंशन्ड किया है कि यू हैव टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी
recent developments in the field of science and technology. That means everything under the sky which is related to science and technology, they can ask. तो इट इज ए ह्यूज एरिना जहां पर कुछ भी आरपीएससी आपसे पूछ सकता है एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है डिफरेंट जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो आपको करने होंगे. एंड रिमेंबर दैट वन मोर थिंग ऑल्सो दे एडेड विच इज one more thing they also added, which is new science and technology centers. So different organizations, their platforms, their new initiatives, their ongoing projects, their achievement they can ask. तो जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, whatever it is in Rajasthan or outside of Rajasthan, at least you should know about you should have some few knowledge about that. तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पूछी जाएंगी. तो आई थिंक अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि किस पे ज्यादा फोकस करना है. इफ यू वांट टू गेन more marks, then definitely initially you should have more focus on technology. After that you should prepare biology, and then for prelims point of view, Rajasthan specific science and technology is also very important, and then you can move on to physics and chemistry. And remember that guys, मेंस में मार्क्स स्कोर करना अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, बिकॉज दे स्पेसिफिकली मेंशन दे विल नॉट आस्क एनी लॉन्ग क्वेश्चन. हमारे टोटल 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे 5 मार्कर होंगे, ओनली 50 वर्ड्स में आपको लिखना है. तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी कम वर्ड्स होते हैं और टू द पॉइंट आप चीजें लिख जाते हो तो बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हो. तो 70 मार्क्स के अंदर आपको 5 मार्कर क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं. तो टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे आपके मेंस के अंदर, सबके सब 5 मार्कर होंगे. दैट मीन्स दे विल आस्क फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक. इनके पास डिफरेंट डाइवर्सिटीज होंगी, जिसमें अप्लाइड सेक्शंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे. तो आप लोगों को भी अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है. दैट मीन्स बायोलॉजी में भी आपको माइक्रोबायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग देख ही रहे हैं. वट एवर इट विल बी it will be in the form of corona or any other virus, or it can also very beneficial in the form of microbes and other living organism. तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा फोकस करनी है. अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. तो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू start a topic which is related to space technology. And remember that space technology में at least you should understand what is the difference between sky and space. हाँ, हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश में आप लोगों ने स्पेस और स्काई एक ही पढ़ा हो, बट यहाँ हमारे टेक्नोलॉजी में स्पेस और स्काई दोनों अलग अलग चीजें हैं. बिकॉज स्काई इज ए पार्ट विच कंसिस्ट द एटमॉस्फेरिक लेयर्स. And remember that you also understand about the layers of atmosphere, which is troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. तो हमारी जितनी भी layers हैं, let's say consider this is Earth surface. And the lowest atmospheric layer from Earth's surface is troposphere. So let's consider it is troposphere. And what is the height of troposphere? The height of troposphere is around 13 to 18 kilometer, and it is not a uniform height because the atmospheric activities near the equator is much more. That's why the height of
troposphere is around 18 kilometer near the equator. But when we move from equator to poles, the atmospheric activities decreases day by day or decreases inch by inch. That's why the atmospheric activity of poles is very low. That's why the height of troposphere at poles is around 13 किलोमीटर. ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा. इसके बाद में हमारे और भी लेयर्स हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और ड्यू टू कांस्टेंट टेम्परेचर एरोप्लेन जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहते हैं. इसी स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर रहती है, एक थिक लेयर ऑफ ओजोन, और यही थिक लेयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बीटा रेज. अल्ट्रावायलेट बीटा रेज से यही ओजोन लेयर हमें बचाती है. तो ये आपकी ओजोन लेयर है. इसके बाद में हमारा डिफरेंट चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक लेयर है जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं. और जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे तो इसी आयनोस्फीयर से स्काई वेव प्रोपेगेशन की बात करेंगे. तो ये आयनोस्फीयर. इसके बाद में हमारा एक लेयर और है जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर. दैट इज एक्सोस्फीयर. And remember that the height of exosphere is around 80 kilometers. So these atmospheric layers is known as sky. And remember that after that exosphere we considers a imaginary line which is known as Kármán line. तो यहां पर हम एक इमेजनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम है कार्मन लाइन. और कार्मन लाइन की जो हाइट है वो है अराउंड 100 किलोमीटर्स. एंड रिमेंबर दैट कार्मन लाइन इज ए इमेजनरी लाइन विच सेपरेट्स स्काई एंड स्पेस. तो कार्मन लाइन से ऊपर वाला जो एरिया है, कार्मन लाइन से ऊपर वाला ये जो एरिया है, इट इज नोन एज स्पेस. एंड कार्मन लाइन से नीचे वाला जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उसे हम स्काई कहते हैं. अब इस स्पेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हो सकता है. जैसे कि इन स्पेस वी सी इन डिफरेंट गैलेक्सीज, वी सी इन डिफरेंट सोलर सिस्टम. एंड इन आवर गैलेक्सी विच इज नोन एज द मिल्की वे वी हैव आवर सोलर सिस्टम. और इसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एटसेट्रा. एंड रिमेंबर दैट the study about the objects of space is known as astrophysics, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्लैनेट्स और इनकी मूवमेंट और इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. एंड रिमेंबर दैट गाइज, in our solar system around 4.6 billion years ago there is a concept which is known as Big Bang theory. and in the बिग बैंग थ्योरी जो सन है हमारा वो एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होकर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स डिफरेंट पोजीशंस पर चले गए, जिसमें से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो अपने रोटेशनल और रिवॉल्यूशनरी मोशन की वजह से प्लेनेट बन गए, जिन्हें आज हम प्लेनेट्स के नाम पे जानते हैं. और कुछ जो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स थे
जिनका साइज थोड़ा छोटा था प्लैनेट से, वो एस्टेरॉइड्स बन गए। और रिमेंबर दैट ऐसे कई सारे इरेगुलर शेप के एस्टेरॉइड्स आपको मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। एंड रिमेंबर दैट ये जो एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, इसीलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। रिमेंबर दैट एस्टेरॉइड्स आर इरेगुलर शेप्ड small parts comparative to planets, and the asteroid belt situated between Mars and Jupiter. बाकी हमारे ये जो प्लैनेट्स हैं जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले आते हैं, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इट दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर आपको सरफेस मिलेगी, जमीन मिलेगी, जैसे अपने अपने अर्थ पर है। और उसके बाद में ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर जोवियन प्लैनेट्स। दे डोंट हैव एनी टेरेन और अर्थ सरफेस, because these are the have gaseous atmosphere, and their ground is also contains a gaseous part. And remember that guys, अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्पेस में, वट एवर इट विल बी, प्लैनेट, सैटेलाइट, एनीथिंग एल्स, हम सब चीजों की स्टडी करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो रिमेंबर दैट space technology is a technology in which we studies about the planets, satellites, their motions, their impact on earth, their changes and every planetary movement. बट यहाँ पर हम जो आर्टिफिशियल चेंजेस की बात करते हैं उनकी बात करेंगे, सैटेलाइट्स की हम बात करेंगे और उनकी ऑर्बिट्स की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष also started a new RAS English medium batch, and remember that it is a prelims oriented target batch, and it started from today, that means 4th May, and it is a live from studio batch, and the standard fee of that batch is only 5,000, and if you want to join a prime features in the batch, then you can avail it in 8,000 only. And remember that guys, RAS टारगेटेड जो बैच है हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये भी अवेलेबल है, जो कि हिंदी मीडियम बैच होगा आपका। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ए ऑफलाइन क्लासरूम, देन यू कैन ज्वाइन RAS समग्र बैच। तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आप ऑनलाइन में लेना चाहते हो तो इट इज ए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, एंड जोधपुर और जयपुर दोनों ही क्लासरूमों से लाइव हो जाएगा। तो जो आप जैसा ज्वाइन करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। एंड गाइज, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैच ऑफ RAS, निर्मल बैच, एंड निर्मल 8.0 बैच इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। एंड कंप्लीट इंग्लिश मीडियम निर्मल 2.0 बैच ये भी अवेलेबल है, जो कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन ए कंप्लीट फाउंडेशन बैच, देन यू कैन ज्वाइन निर्मल 2.0 बैच। एंड रिमेंबर दैट वी हैव द लार्जेस्ट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इन आवर इंग्लिश मीडियम बैच। तो जोधपुर और जयपुर दोनों से ही एक और हिंदी मीडियम बैच स्टार्ट होने वाला है, समग्र बैच, जो कि होगा हमारा 25 मई से। तो इसे भी, इसके बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जस्ट स्कैन द QR कोड एंड अवेल द इंफॉर्मेशंस। तो गाइज, इन सब के बाद में नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सैटेलाइट्स एंड देयर ऑर्बिट्स। तो रिमेंबर दैट what is satellite and their orbit. So satellite is a object which is circulating around a planet. It can be a natural satellite or a artificial satellite. So just remember that, let's see, consider that is our planet Earth, and that is a imaginary
circulatory path. And let's say consider that is a satellite. ये हमारा कोई सैटेलाइट हो गया। अब देखो कोई भी सैटेलाइट, satellite is a object which is orbiting around a planet in a fixed circulatory or elliptical path, and that elliptical path is known as satellite orbit. तो कोई भी सैटेलाइट जब मूव कर पाएगा जब सैटेलाइट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हों, वन इज टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, and another one is far away from the center, that is centripetal force. अब देखो सैटेलाइट इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. Like moon is the natural satellite of earth, but we have various different artificial satellite like GSAT and Cartosat, RISAT, OceanSat, etc. तो different satellites भी हमारे हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो वी शुड only and only think about the artificial satellites. तो remember that guys. और सैटेलाइट जो होंगे हमारे, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो सैटेलाइट्स के आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स भी हैं. जैसे now we are going to study about LEO, which is low earth orbit, and another one is MEO, which is medium earth orbit, and guys the third one is GEO, which is geostationary earth orbit. And the last one is PEO, polar earth orbit. These are four types of satellite orbits, and you should remember about the applications of these orbit, ki which kind of satellite just projected in these kind of orbits. And first orbit is our low earth orbit, LEO, low earth orbit. And remember that guys, low earth orbit is the nearest orbit from earth, that's why it is known as low earth orbit. And remember that it is a geocentric orbit. It is a geocentric orbit. That means the height of low earth orbit is considered from the center of the earth, but the height we calculated from the surface of the earth, but on the basis of equator. So it is geo earth orbit. So let's say that is earth and that is low earth orbit.
that is LEO, low Earth orbit. And remember that what is the height of that low Earth orbit? The height of low Earth orbit is around 100 kilometers to 2000 kilometers, but practically we launched satellites from 300 to 900 kilometers. तो वैसे तो हम height of satellite की अगर बात करें तो it is around 100 to 2000 kilometer, but the practical height in which we projected satellites generally, it is around 300 to 600 kilometers. And on the basis of that practical height, the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth, it is known as the orbital period of the satellite. तो कोई भी एक सैटेलाइट है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है, that is orbital period. तो orbital period of satellite is around 90 to 120 minutes. And one of the most important thing is applications. But before the applications of the low Earth orbit, you should remember that the lifespan of satellite. कोई भी सैटेलाइट अगर लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाएगा तो वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है? इट इज अराउंड 2 to 5 years, because the low earth orbit is the nearest orbit from the earth's surface. That's why the atmospheric circulations and their atmospheric environmental impact is huge. That's why the lifespan of the satellite is low. That's why the total lifetime of the satellite is only 2 to 5 years. That means each and every satellite of low earth orbit should be changed after 5 years. That's why the number of satellites of low earth orbit is very very high, and the different satellite waste is also increasing exponentially. And the satellite waste of low earth orbit is known as space debris, and it creates a huge problem of light pollution and Kessler syndrome. Kessler syndrome is a continuous collision of different parts of satellite, and it can also harm some live satellites or distort the positions of the satellite. But remember that one of the most important thing of low earth orbit is applications of low earth orbit. कि कौन कौन से सैटेलाइट जो हैं वो हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड न्यूज में अक्सर दिखने वाला सैटेलाइट विच इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. Remote sensing satellites are those satellites which can transfer information remotely to a distant area. And remember that remote sensing satellites आपको different informations देते हैं, whatever it will be related to humidity, CO2 level or different information from one point to another point. ऐसे ही हमारे स्पाई सैटेलाइट्स, जितने भी स्पाई सैटेलाइट होंगे वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही होंगे. सेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट which plays a very important role during natural disaster. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बाद जितने भी स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, they also situated in low earth orbit. Like world's most famous space telescope is Hubble telescope. Most advanced and most powerful telescope is Hubble telescope.
from USA. It is situated in the low Earth orbit. And remember that इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अक्सर न्यूज में रहता है, कभी सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुक जाती हैं तो चर्चा में होती हैं, या फिर कभी हमारे शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में स्पेस स्टेशन पर जाते हैं तो वो चर्चाओं में रहते हैं। तो इसीलिए अक्सर चर्चाओं में रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड रिमेंबर दैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज the largest artificial object in the space, and the establishment of International Space Station is started at 1998 from Zaira module, and the establishment completed in 2011, and it is in working condition from 2011 to 2030. After 2030, it will fall out in Nemo Point in Pacific Ocean. And remember that guys, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में इंडिया ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। देयर आर ओनली 5 ऑर्गेनाइजेशन which takes place for formation of International Space Station. One is NASA from USA, another one is Canadian Space Agency from Canada, third one is European Space Agency from Europe, fourth one is Roscosmos from Rus, and fifth one is JAXA from Japan. That means India and China both are not a participant or member of International Space Station. That's why maximum countries now want to build their own space station, and in the race of indigenous International Space Station, Tiangong 1 already established by China, and India's indigenous space station, which is known as BAS, Bharatiya Antariksha Station, it will be situated till 2035, and we will start the formation of Bharatiya Antariksha Station from 2027 to 28. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रिमेंबर दैट लो अर्थ ऑर्बिट इज ए जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, और इसमें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्पेस टेलीस्कोप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सब हम लोग इसमें भेज सकते हैं। इसीलिए स्पेस डेब्रिस, दैट मीन्स सैटेलाइट वेस्ट, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एंड इट कैन कॉज ए कैसलर सिंड्रोम एंड लाइट पॉल्यूशन। एंड रिमेंबर दैट गाइज, after that we have another orbit which is known as medium earth orbit, MEO. Second orbit, satellite orbit is MEO, medium earth orbit, and definitely the height of medium earth orbit is much more than low earth orbit, and it is also a geocentric orbit. That means the height of medium earth orbit is taken with the respect of equator, MEO. And remember that the height of medium earth orbit, it is around 2000 to 36,000 kilometer, but the practical height of medium earth orbit is around 5,000 to 30,000 kilometers, because most of the satellite of medium earth orbit situated between 5 to 30,000 kilometers, and the orbital period of satellite is around 5 to 20 hours, and the lifespan of satellite in medium earth orbit is around
5 to 10 years. And remember that the lowest number of satellites situated lowest number of satellite situated in medium earth orbit comparative to polar earth orbit or low earth orbit or geostationary earth orbit. So remember that guys, सबसे कम सैटेलाइट जो भेजते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं, वन एंड ओनली नेविगेशन सैटेलाइट navigation satellite, that means a satellite which is used for navigation, that means location, that means Google Map आप लोगों को जो मैप के डायरेक्शंस दिखाता है, वो जिन सैटेलाइटों की वजह से आप लोगों को गूगल मैप पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस देखने को मिलती हैं, वो सब के सब हमारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही हैं. एंड रिमेंबर दैट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज established various constellations of these satellites, and the constellations of these navigation satellite is known as navigation system. तो हर किसी कंट्री का अपना एक अलग और एक नया नेविगेशन सिस्टम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जाम दे कैन आस्क ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यू शुड रिमेंबर इट. तो वी कैन ड्रॉ ए चार्ट. Country and their navigation system. So remember that guys, USA have GPS navigation system. GPS means global positioning system. And we used GPS, and for the user we have to pay some user charges to USA. And after that, Russia also have a navigation which is GLONASS, and the Europe's navigation system is known as Galileo, and the navigation system of China is known as Baidu, and the navigation system of Japan is known as QZSS, that means quasi zenith satellite system. So different countries have their own navigation system. India also have a navigation system which is known as NAVIC or IRNSS, that means Indian Regional Navigation Satellite System. But exceptionally, our navigation system is not situated in medium earth orbit, because it lies in geostationary earth orbit, because we have some less number of satellites. We have only 7 satellites in our NAVIC navigation system. And remember that guys, these kind of global navigation systems contains 25 to 35 40 satellites. That's why we want to develop a frugal innovation, and with the help of only 7 satellites, we just developed a navigation system which is known as NAVIC. So exceptionally, our navigation system NAVIC satellite lies in geostationary earth orbit. So guys, this is all for today, and remember that guys, if you want to join a complete RAS Prelims Target English Medium batch, then it is started from today, 4 May. So you can join it in standard course. You can join it in only 5,000, and for
prime fees, you can join it in 8,000. So thank you to all of you guys. Have a great day. Happy learning to all of you. And we will meet again tomorrow, same time, same place. So thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat.